Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpatha. So in this lecture series of microeconomics, we'll be studying Cournot Model. So in Cournot Model is basically an example of oligopoly. So here it is assumed that the demand curve is a straight line where the in the midpoint elasticity is always equal to 1. I've already in the basics of the oligopoly I've already uploaded a video where we have derived this, that MR is equal to price into 1 minus 1 upon elasticity, and if elasticity is 1, that means MR would be 0. It would be 0, so it would lie straight down on the x-axis. Also in this model it is assumed that the marginal cost is 0. That means if marginal cost is 0, it would lie on the horizontal x-axis. So that means if cost is 0, and here I'll just explain with an example that there are two firms in the market, and in period 1 firm 1 assumes that firm 2 produces 0. That means firm 1 can produce the entire quantity, that is this. But by producing entire quantity, firm 1 would not benefit anything. उसको कुछ benefit नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको कुछ profit नहीं होगा on producing this x-axis. तो profit maximizing condition क्या होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बोलती है जहाँ पर MR इज इक्वल टू MC, प्रोड्यूस दैट. तो दिस इज MR MC जहाँ मीट करा, हियर ऑन द डिमांड कर्व और AR कर्व वी कैन सेट द प्राइस एंड वी कैन प्रोड्यूस दिस. तो इसमें फर्म 1 विल प्रोड्यूस हाफ द क्वांटिटी. उसके बाद फर्म 2 नोज कि फर्म 1 ने हाफ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लिया. दिस मार्केट इज कैप्चर्ड बाय फर्म 1. फर्म 1 ने इतना प्रोड्यूस कर लिया है. दिस इज प्रोड्यूस बाय फर्म 1. रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग इज दिस मच जो रह गया, दिस मच. अब फर्म 2 क्या प्रोड्यूस करेगी? रिमेनिंग विच इज दिस, इसका हाफ प्रोड्यूस कर सकती है. दैट मीन्स we can draw MR curve from here. That means it will produce 1/4 produce करेगी firm 2. Now firm 1 knows कि 1/4 is produced by firm 2 in period 2. रह कितना गया? 3/4. Remaining का will do half. That means 3/8 will be produced by firm 1. Similarly, this will go on till period n, जब तक ये दोनों कितने ना हो जाए? 1/3. This will continue in period 3. This will continue in period till n, जब तक ये 1/3 ना हो जाए दोनों, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा. ये जो एक्शन रिएक्शन है, दिस विल कंटिन्यू ईच फर्म टू हैव अ नाइव बिहेवियर मतलब दे डू नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स. कुर्नो मॉडल की ये है एक लिमिटेशन दैट द फर्म्स डू नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक. उन्होंने पिछली गलती कोई करी, दे विल रिपीट अगेन. तो ये एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा. तो इन दोनों का कितना प्रॉफिट होगा? दैट वुड बी 2/3. दैट मीन्स इट विल लाई समवेयर हियर. On the x-axis it will lie somewhere here. 2/3 will lie somewhere here. It will produce that much quantity. Perfect competition में it will lie on the x-axis की पूरी quantity produce करेंगे. कुर्नो में यहाँ कहीं बीच में. It is assume. मोनोपोली में सबसे ऊपर होता है. मोनोपोली में it is here. मोनोपोली का सबसे ऊपर, कुर्नो का इधर होता है, and here it is perfect competition. That is there. So eventually on an equilibrium each firm will reach 1/3 of the total market, 1/3, and they'll produce दोनों मिला के 2/3 of the total market. But we must note that firm maximize their own profit in each period. हर period में they'll try and maximize their profit.
बट इंडस्ट्री जॉइंट प्रॉफिट इज़ नॉट मैक्सिमाइज, इंडस्ट्री का जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा. अच्छा, इन दिस केस वी हैव सीन कि ये 1/3 कैसे आया, दैट इज़ 1/n+1. 2 फर्म्स थी, दैट मीन्स फर्म का जो हमारा फर्म और इंडस्ट्री का अलग अलग होता है, फर्म का जो क्वांटिटी होगा दैट वुड बी 1/1+n, और इंडस्ट्री का इट वुड बी इतने टाइम्स n हो जाएगा, वो इंडस्ट्री का हो जाएगा. आई विल जस्ट राइट सेपरेटली. अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इट वुड बी n/n+1. गेटिंग? और इस वाले दिस इज ऑफ फर्म, ये फर्म का होगा. ओके, so that means the behavior pattern of firm is naive and they do not learn from the past mistake. That this assumption you should, this you should remember कि they do not learn from their past mistakes. So this action reaction follows and the total quantity that is produced by both the firm is 2/3. So this was all about the Cournot model. There are few assumptions that I can just tell you once again before ending this video. Key limitation is that the behavior pattern of the firm is naive and they do not learn from their past mistake. This you can write. One limitation: do not learn from past mistake. And second is that it is a closed model, cause entry is not allowed once adjustment process begins. एक बार जब adjustment process हो गया तो it is a closed model, cause entry is not allowed. दोबारा entry allowed नहीं है. Entry is not allowed once adjustment process begins. This you can write in your notebooks as well. These are the limitations which are asked in IAS exam, IES also it has been asked. So although the quantity produced by competitor is assumed to be constant at each state, its quantity competitor which is drive price downward towards the competitor level. Fourth is that the model does not say how long adjustment process begins. मॉडल में ये नहीं बताता कि कितनी दूर तक एडजस्टमेंट प्रोसेस जाएगा. दिस ऑल्सो यू कैन राइट दैट इट डज नॉट से हाउ लॉन्ग एडजस्टमेंट पीरियड विल बी, कितने दिनों तक या कितनी देर तक एडजस्टमेंट प्रोसेस चलेगा. दैट इज ऑल्सो नॉट. अजम्पशन ऑफ कॉस्टलेस प्रोडक्शन इज अनरियलिस्टिक, और हमने ये जो अज्यूम किया था कि MC 0 है, कॉस्टलेस प्रोडक्शन, ऐसा कुछ होता नहीं है. तो दैट इज ऑल्सो अनरियलिस्टिक. द अजम्पशन ऑफ कॉस्टलेस प्रोडक्शन इज unrealistic. Okay, so although quantity produced by competitor is assumed to be constant, हम यहाँ पे assume कर लेते हैं कि ये जो competitor की जो quantity है that the other is producing is constant at each state. It's quantity competitor which drive price downward towards the competitor level. That is also unrealistic. हमने assume कर लिया कि ये ऐसा कुछ करेगा. That is really unrealistic. So this was all about Cournot model. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to Economics by Vishan Arpita. Bye bye.